Doctor, we're here on the 6th floor. So, इस floor पे कौन सी facilities हैं? The sixth floor consists of child and mother care center. It consists of maternity wards, the pediatric or the children ward, and the ward for the neonates, newborn babies, plus the labor room. And there's a dedicated operating theater for patients who are in trouble at the labor room and they are pulled for emergency surgeries. So, any complications during childbirth are handled on this floor? Yeah, on this floor. Or any pediatric concerns are also? Also, they have life critical support like ventilator and oxygen supplies. Perfect. So to our left, I believe, is the PEDS ward. What does PEDS stand for? PEDS is the pediatrics ward. Pediatrics means the children ward. Achha, okay. The new kids who are less than 12 years old. Okay, okay. So let's take a trip inside and see what they are. Pediatric ward is 8-bed facility, having its dedicated play area, all facilities for the kids. We have tried to keep them entertaining as well. So they have their own dedicated areas where they can interact and play. It's very indicative that ये pediatric ward है because it is much more colorful than the rest of the hospital. यहाँ orange walls and then the beds are colorful, the yellow and orange. So, you know, a little bit of color in these kids' lives definitely gives them a lot of hope. From the PEDS ward, we make our way to the neonatal ward. So, doctor, I believe we're going to meet the manager of nursing in there. Actually, this is the neonates critical ward. This is the most sensitive ward because newborn babies who have some critical problems are hospitalized here, admitted here for a while till they recover. Dr. Salima Dosa is a manager of nursing. She's PhD in nursing and she looks after the critical areas of the hospital. Assalamu alaikum, doctor. I'm Nausher Khan. So we are standing here with Dr. Salima Dosa, who is the head of manager of nursing for especially the neocritical ward. So doctor, what exactly is your day like in the neocritical ward? This basically comprises of 7 incubators, which means that the baby who born immediately can be placed into the incubator to look after themselves, whether they are suffering from any sort of a disease. Either it is a respiratory problem, either they are like at the moment we have one pediatric, one neonate. That bacha is on basically ventilator due to the sepsis. We are providing artificial breath to that baby to make more survive. He is gradually increasing his health because he is here since 11. He admitted with different disease of a sepsis and the respiratory distress. Besides that, we got different 2 more babies which are again having the respiratory difficulties. We got qualified staff, trained technician who are responsible for day-by-day activities basically. Achha, okay. So doctor, on an average weekly basis, how many babies are admitted into the neonatal ward? Yes, we can't just go by weekly, but till from the 1st July to today is the 13th July. If you're going to check out, we got 17 to 18 admission in during that 13-14 days, which mean all the baby gets settled, stable, then we shift it to the mother and they can discharge from here. Achha, okay. So, यहाँ का success rate, I can see that all the necessary equipment is provided. Yes. The success rate of the babies surviving and, you know, becoming healthier, it's fairly high? It's very high because we are providing all the control, centralized system with them. All the things are monitored by the monitor. The staff are capable, enough capable. We got 24/7 facility of a doctors, nurses. Many more consultants are being on the on-call. So whenever you got confused, you need some sort of a help, you can definitely make them call. They have all the numbers. They have all the synchronized things with them. So we doesn't have any problem in during controlling of a baby. We got the equipments here. We got the crash cart, which means all the emergency drugs are being placed here. So we doesn't really need to rush up for anything. If something goes wrong here, we know how to manage the things. We are here since 9 to 9. Doctors are here from different hours. So by the grace of Allah, we are managing very well. So doctor, you must have composure of steel because this is especially a very unfortunate part of the hospital, you know, looking at these poor infants and, you know, in their malnourished states. It must get to you after a while. So how do you manage to stay calm? Sometimes definitely because you are a human being, it gives you a decreased feeling, make yourself low, especially when somebody expired in that age. But definitely if you look after your performances, you look after your professional, you can't be just take your personal life and professional life bifurcated. Definitely sometimes we do feel down, but again if we feel down, then definitely it is a very difficult to handle the parents outside because they are in much agony as compared to what we are facing. Perfect.
As you can see, we have concluded a conversation with Dr. Salima, and despite the fact that this is on the more depressing side of the hospital, it gives everybody hope out there in knowing that this hospital, Burhani Hospital, provides the services and has the qualified staff capable of dealing with any sort of situation, no matter how large or small. From the neonatal ward to the labor ward. So we're standing here with Dr. Anita Rajesh. Dr. Anita Rajesh. Dr. Anita, आप head हैं labor ward की? जी. अच्छा, ओके. तो आपके responsibilities में क्या include होता है? We see the patients and the deliveries and OT preparation, patients for OT preparation. ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. तो लेबर वार्ड में कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं? एक तो डिलीवरीज होती है और न्यू एडमिशन इमरजेंसीज जो भी होती हैं गायनी की ऑप्स की लेबर रूम में ही आती हैं. फिर वहीं से हम प्रिपेयर करते हैं फर्दर सी सेक्शन के लिए या जो भी होता है गायनी का पेशेंट. तो सारी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं चाइल्ड बर्थ से एफिलिएटेड वो सारी इस वार्ड में हैंडल होती हैं, लेबर रूम में होती हैं. अच्छा, तो डॉक्टर आप बताएं एवरेज ऑन अ वीकली और अ मंथली बेसिस आपके यहाँ कितनी डिलीवरीज होती हैं? डिलीवरीज मंथली तो पर 160-170 होती है. 160 जी 160-170 तक होती है और एडमिशन तो मोर देन 200-300 होती है. तो काफ़ी आपका बिजी स्केड्यूल रहता है. तो ऑन स्टाफ अभी एट वन टाइम आपके पास यहाँ कितने डॉक्टर्स और कितने नर्सेज अवेलेबल होते हैं? इवनिंग में लेबर रूम में 2 डॉक्टर्स होते हैं और नर्सेज होती है एक और दूसरा स्टाफ होता है जैसे आया मासी वासी 2-3-4 वो होते हैं. तो आपके ख्याल में ये जो आपको स्टाफ दिया हुआ है, जिस स्टाफ में आप ही हिस्सा हैं, दिस इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी प्रॉब्लम्स दैट द लेबर वार्ड फेसेस? जी हाँ, फुली कैपेबल होता है और बहुत अच्छा मतलब है. तो बेस हॉस्पिटल रूल्स के मुताबिक वी कैन नॉट गो इन बिकॉज इट इज़ प्राइमरली जस्ट अ फीमेल वार्ड. तो इज देयर अ रीज़न बिहाइंड दिस कि सिर्फ औरतें अंदर जा सकती हैं? हाँ, क्योंकि यह तो एशियन कंट्रीज है, पाकिस्तान है, कोई फॉरेन नहीं कि जहाँ आप मेल भी चले जाएं. परफेक्ट. तो कंफर्टेबिलिटी का इशू है, इसलिए अंदर सारे जो आयाज हैं असिस्टेंट्स एंड नर्सेज डॉक्टर सारे औरतें हैं? हाँ, सारी औरतें. अच्छा, ओके, परफेक्ट. We have concluded our tour of the 6th floor where we saw the peds ward, the neonatal and the labor ward, and we had interviews with a couple of doctors. So now we'll make our way to the 7th floor where the medical and surgical wards house themselves. Shall we, doctor? Yes, please. So we're here in a private room with Dr. Ved Prakash, who is a long-time patient of Burhani Hospital. How are you, doctor? Fine, thank you. तो डॉक्टर आप बता सकते हैं आप क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो आपने यहाँ दैट यू हैव टेकन एडवांटेज ऑफ, जो आपके सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड द क्वालिटी ऑफ द स्टाफ, द डॉक्टर्स एंड द हाउसिंग अरेंजमेंट्स कैसी हैं? All are super. ऑल आर सुपर्ब. डू यू हैव एनी कंप्लेंट्स, सजेशंस, कंसर्न्स? No, not at all. अच्छा, आपका बड़ा वन साइडेड सा स्टांस है. What? बड़ा आपका seems to be very optimistic, positive stance. Yeah, because I'm representing patient of this hospital. अच्छा. So I have a lot of experience regarding the all doctors and nursing care. अच्छा. All are super. All are superb. आपकी ये जो हाउसिंग फैसिलिटीज हैं, द बेड्स एंड द एयर कंडीशनिंग वगैरह सारे यू आर कंफर्टेबल? Yeah, I don't have a complaint regarding all of these things. अच्छा, अच्छा, perfect. So what about the prices, doctor? Do you feel कि यहाँ इस hospital की prices are fair if it's it's cheaper than other hospitals or if it's more expensive? I think it's not expensive. So. अच्छा. Yeah. तो आपके ख्याल से good value for money है? Yeah. अच्छा, perfect. So hopefully, doctor, you can get better soon, very soon, and we can see you up on your feet practicing again, inshallah. I'm standing at the nursing station on the 7th floor with the head nurse, Miss Kavish Mariam. How are you, Miss Kavish? I'm fine, thank you. अच्छा, तो बताएं यहाँ कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं पेशेंट्स के लिए? हमारे यहाँ पे मेडिकल, सर्जिकल, पीडियाट्रिक्स और मैटरनिटी सब केयर प्रोवाइड करते हैं. तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या आता है? आई एम हेड नर्स ऑफ दिस फ्लोर और सबको लुक आफ्टर करना, क्या केयर्स प्रोवाइड की जा रही हैं और जो प्रॉब्लम्स पेशेंट्स फेस कर रहे हैं उनको डील करना, ये सब कुछ आता है. अच्छा, तो रेगुलरली किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं दैट द पेशेंट्स फेस? इन टर्म्स देयर इज अ डिफरेंट वास्ट वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम्स? नो, एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम्स तो नहीं होती. कभी कभार जैसे न्यू प्रोजेक्ट है, पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ गई हैं तो उनके साथ डील करना, मैनेज करना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है. अच्छा, ओके. तो प्रीटी मच एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं और थोड़ा सा गेटिंग यूज्ड टू द न्यू प्रोजेक्ट वगैरह.
अच्छा, तो बताएं, अगर इफ़ अ पेशेंट इज़ इन नीड, उसको आपकी असिस्टेंट चाहिए या मिस्टर शाहिद की असिस्टेंट चाहिए, हु इज़ ऑल्सो रजिस्टर्ड नर्स, तो हाउ डू दे कॉन्टैक्ट यू फ्रॉम देयर बेड्स? हम अर्ली मॉर्निंग आते हैं, सब पेशेंट्स का बेड टू बेड राउंड करते हैं और उनसे पूछते हैं कोई प्रॉब्लम या कुछ है, तो फिर वो हमें बताते हैं और हम उसको उसी वक्त सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इनकी 24 आवर्स मॉनिटरिंग हो रही होती है? जी तो बताएं, कितने डॉक्टर्स और कितने नर्सेज हैं इस फ्लोर पे? हाँ, हमारे पास यहाँ पर 7 नर्सेज हैं, इसके अलावा एक ड्यूटी डॉक्टर होते हैं 24 आवर्स। और इस फ्लोर पे जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट रूम्स तीनों हैं? जी मिस्टर शाहिद, आप बता सकते हैं ये नर्स कॉल सिस्टम क्या है? जी, ये हर बेड पे एक नर्स कॉल सिस्टम है। जिस पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से बेड रिंग करते हैं, हमारा कोई ना कोई स्टाफ उस बेड पे उसी टाइम पहुँच जाते हैं और जो भी उसको सर्विस होती है वो प्रोवाइड करते हैं। हमको जो भी प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आपके ख्याल से ये काफ़ी एफिशिएंट सिस्टम है? बहुत ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम है और इसकी वजह से जो पेशेंट की प्रॉब्लम होती है वो जल्दी सॉल्व हो जाती हैं, स्टाफ जल्दी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। टाइम एफिशिएंट, रिसोर्स एफिशिएंट। थैंक यू वेरी मच मिस्टर शाहिद।